Okay. So screen is visible? Yes, ma'am. Okay. So here the 3-bit synchronous counter, and here is design and analysis of 4-bit synchronous counter. So synchronous counter we have discussed. So what are the design steps? First, determine the number of flip-flops required. Okay. So now tell me 3-bit. 3-bit counter means how many flip-flops are required? 3-bit counter. Very good. Very good. 3-bit means 3 flip-flops. Okay. Suppose in other ways we are saying that suppose you will count the sequence up to 5. Okay. So you have to design a counter which will count up to 5. Then how many bit counter you will use? How many bit flip-flops or how many bit counter you will use? Have you understood my question? Ma'am, can you repeat? हाँ, अगर 3-bit काउंटर है तो तुम लोग बोले कि 3 flip-flops. Okay. My question is that so अच्छा 3-bit flip-flop means it will count from 3 flip-flops. So it will count from 0 to 3. 0 to 3. 0 to 2. 0 to 2. 3-bit. 3-bit means कितना काउंट करेगा? 0 to 7. 3-bit तुम लोग पढ़े नहीं हो कि 0 bit मतलब कितना, how many possible combinations, so that it will count. So 3-bit मतलब it will be counting from 0 to 7. So my question is that suppose you have to design a counter which will count up to 5. तो कितना बिट फ्लिप-फ्लॉप यूज करोगे? क्योंकि 7 तक काउंट करने के लिए तो 3 बिट यूज कर लिए, अब 5 करने के लिए क्या करोगे? 3 bit. क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड. That means that 3-bit will count up to 7. Okay. That means अगर तुम्हारा 7 तक काउंट किया जा रहा है तो उसके लिए तुमको 3-bit की जरूरत है. उसमें से तुम 5 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 5 कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो. देन जब 8 हो जाता है फिर 4 बिट काउंट कर. तो वही मैं पूछ रही हूँ कि तुम्हारे इसीलिए वो क्या लिखा है कि दिस फ्लिप फ्लॉप n इज लेस देन इक्वल टू 2 to the power small n. अगर मैं 4 बिट यूज करती हूँ तो कितना वो काउंट करेगा? कितना काउंट करेगा? 0 to 15. वेरी गुड. लेकिन अगर मैं बोलूंगी कि डिजाइन करो ऐसा काउंटर जो 12 तक काउंट करता है तो कितना फ्लिप फ्लॉप यूज होगा? 4. वही 4, बिकॉज मैक्सिमम 60 तक तुम यूज कर सकते हो 4 बिट. ओके. सो दैट इट इज सेइंग n इज लेस देन इक्वल टू 2 to the power n. तो 2 to the power n 4 बिट के लिए तो 2 to the power n तो 16 हो जाएगा, लेकिन तुम उससे लेस के लिए भी तुम 4 बिट यूज करो. ओके. नेक्स्ट वन इज ड्रॉ द स्टेट डायग्राम शोइंग द पॉसिबल स्टेट. अगर सपोज मैं बोलती हूँ 3 बिट. ओके. 3 बिट मतलब वो क्या क्या काउंट करेगा? बोलो, मैं क्या क्या करेगा? 0 0 0 3 बिट का फ्लिप फ्लॉप ना. दिस इज 1 फ्लिप फ्लॉप, सॉरी, दिस इज 1 फ्लिप फ्लॉप, दिस इज अनदर फ्लिप फ्लॉप, दिस इज अनदर फ्लिप फ्लॉप. सो एंड 1 फ्लिप फ्लॉप इज द स्टोरेज ऑफ सिंगल बिट. सो फर्स्ट वो क्या शो करेगा? 0 to 7 तो 3 फ्लिप फ्लॉप का कंटेंट क्या होगा? 0 0 0. नेक्स्ट क्या दिखाएगा? 0 0 1. वेरी गुड. 0 0 1. नेक्स्ट 0 1 0. then 0 1 1, then 1 0 0, then 1 0 1, 1 1 0 and 1 1 1. Okay. Next, if I am applying the clock pulse, because all the flip flops will be activating by the clock pulse. So after the 7, if I will again give the clock pulse, then what it will count? 0 0 0. Very good. Again it will count 0 0 0. Okay.
because its maximum count will be 0 to 7. Okay? तो इसके लिए हम स्टेट डायग्राम इसको बोलते हैं स्टेट डायग्राम. मतलब अगर इसको हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, दिस वन इज नोन एज द स्टेट डायग्राम. 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1. This will be represent the state diagram. Okay. Then if tell me that in the state diagram, if 0 0 is my present state, then what is my next state? Tell me, what will be my next state? 0 0 1 Very good. If 0 0 1 is my present state, then what will be my next state? 0 1 0. Very good. 0 1 0 is present state, this one next state. If this one present state, this one next state. If this one present, this one next. This one present, this one next. This one present, this one next. Okay. So actually what happened in the combinational circuit, we have designed the circuit. कैसे डिजाइन करेंगे? अगर हमको इनपुट दिया गया है, इनपुट if the input is this one and output we are requiring this one, तो output के लिए कैसे हम डिजाइन करेंगे? That the circuit how we are getting that the link of the output with the input we are finding out by the formula that expression, and that expression we are replacing by the circuit. अभी वही चीज हम सिंक्रोनस में करेंगे. हम लोग जब पता है कि सिंक्रोनस में हम लोग बेसिकली एम्फेसिस देते हैं मेमोरी को. सो मेमोरी मीन्स द स्टेट ऑफ दैट मेमोरी और द स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप. तो अगर मुझे मेरा प्रेजेंट स्टेट मतलब अभी मैं काउंट ये काउंट करेगा 0, तो 0 का 3 बिट रिप्रेजेंटेशन 0 0 0. नेक्स्ट काउंट करेगा 1, मतलब क्या होगा कंटेंट 0 0 1 होगा. तो व्हाट आई विल डू so that the 0 0 0 is just next convert to 0 0 1. Then 0 0 1 is converted to 0 1 0. So what will be your input so that these states are changing that you are going to design? Have you understood this one? Have you understood? Or once again I will repeat. Hello? हेलो. यस मैम. मतलब अगर मेरा एक मेमोरी में 0 है, मुझे चाहिए 1, तो मैं मेमोरी का इनपुट भी मेरा जाता है तो टोटल सीक्वेंस का सर्किट हो जाता है. तो मैं इनपुट क्या दूंगी सो दैट कि वो जो 0 था अभी वो 1 आएगा, वो मैं डिजाइन करूंगी. ओके. तो यहाँ पे देखो, सो फॉर दैट केसेस एक्साइटेशन टेबल इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. व्हाट इज एक्साइटेशन टेबल? देखो, ये अगर 3 बिट का सिंक्रोनस काउंटर है तो कितना आउटपुट आएगा? कितना आउटपुट? 3 फ्लिप फ्लॉप्स. सो हाउ मेनी आउटपुट्स? हेलो हेलो. 3 फ्लिप फ्लॉप्स मीन्स हाउ मेनी आउटपुट? क्विकली रिस्पॉन्ड मी. 3 फ्लिप फ्लॉप, एक फ्लिप फ्लॉप का कितना आउटपुट होता है? अरे एक फ्लिप फ्लॉप का कितना आउटपुट होता है? कैन यू हियर मी? यस और नो? यस मैम. क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है. अरे मतलब आउटपुट 3 फ्लिप फ्लॉप से तो एक फ्लिप फ्लॉप का कितना आउटपुट? फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड टू स्टोर हाउ मेनी बिट? 1 bit. 1 bit. So 3 flip flop means how many output? 3 output. 3 outputs. Okay. So what are those output? Here Q2, Q1 and Q0. Okay. ये ऐसे रिप्रेजेंट नहीं, एक्चुअली में ये ऐसा है Q2, Q1, Q0. So 3 output because 3 flip flops are there. This is one, this is another, this is another flip flop. Okay. तो इसका 3 आउटपुट ये होगा तुम्हारा Q2, this is Q1 and Q0. Clear? Then this is which type of flip flop? That is also given in the question. Maybe JK, maybe D, maybe D, maybe T. But in this particular cases we have taken as JK. तो यहाँ पे जो इनपुट होगा वो क्या होगा? J2K2.
होगा कि नहीं? हेलो, इसका क्या होगा? इनपुट, टेल मी। हेलो, हैव यू अंडरस्टूड? अरे थ्री फ्लिप फ्लॉप, जब फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करोगे तो एक वन फ्लिप फ्लॉप मीन्स इनपुट मस्ट बी देयर एंड क्यू बार मस्ट बी देयर, यस और नो, विथ ए क्लॉक पल्स, यस और नो, टेल मी। हेलो, यस मैम। तो यहाँ पे अगर मेरा थ्री फ्लिप फ्लॉप है तो थ्री फ्लिप फ्लॉप मतलब एक है Q2 जो ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, देन Q1, अनदर इज Q0। तो ये बोला है कि मेरा पहला जो स्टेट मतलब क्या आना चाहिए, पहला जो इनिशियली इसका आउटपुट 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। इनिशियली वी आर अज्यूमिंग 0 0 0। नेक्स्ट क्या आना चाहिए कंटेंट? नेक्स्ट क्या आना चाहिए? 001 001 आना चाहिए। फिर क्या आना चाहिए? 010, फिर 011, 100 ऐसा आना चाहिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? दिस इज Q2, Q1, Q0, दिस इज QT+1। मतलब अगर प्रेजेंट स्टेट मेरा Q2 है तो QT+1 ऑफ Q2। ओके, तो ये है मेरा प्रेजेंट स्टेट। अभी क्या है? 000 अगर प्रेजेंट स्टेट है तो नेक्स्ट स्टेट होगा मेरा 001। अगर 001 मेरा प्रेजेंट स्टेट है तो नेक्स्ट स्टेट होगा 010। 010 अगर प्रेजेंट स्टेट है तो नेक्स्ट स्टेट होगा 011। ये कैसे किया, कंप्लीट किया? नॉर्मली 3 बिट मतलब 3 बिट का कॉम्बिनेशन तुम लिख लिए। अब ये नेक्स्ट स्टेट कैसे करोगे? बिकॉज हमको चाहिए 000 टू 001। सो ये जो है इसका नेक्स्ट स्टेट जो ये है वही है हमारा यहाँ भी होगा। जैसे कि सपोज हम लोग काउंट करें 0, इसके बाद 1, फिर 2, फिर 3। सपोज प्रेजेंट स्टेट मेरा 0 है तो नेक्स्ट मेरा क्या है? नेक्स्ट क्या है? 1 है। तो अभी जो नेक्स्ट 2 होगा, 2 के लिए प्रेजेंट स्टेट क्या है? 1 है। तो वही मैं बोलूँ, दिस इज द प्रेजेंट स्टेट, देन दिस इज द नेक्स्ट स्टेट, दिस इज द प्रेजेंट स्टेट, दिस इज द नेक्स्ट स्टेट, दिस इज द प्रेजेंट स्टेट, दिस इज द नेक्स्ट स्टेट। ओके, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे अगर 0 है तो ये 1 है, ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 3 है, ये 3 है तो ये 4 है। हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट हम लिख सकते हैं कि नहीं? यस मैम। तो वही बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में भी लिखा हुआ है 000 प्रेजेंट स्टेट तो 1 है तुम्हारा नेक्स्ट स्टेट, 1 तुम्हारा प्रेजेंट स्टेट तो 2 तुम्हारा नेक्स्ट स्टेट। So like this we will complete this one. This is QT and QT+1. Have you understood this one? QT and QT+1. Yes ma'am. Okay. Now how many flip-flops are there? How many flip-flops? 3. 3. One is Q2, one is Q1, another is Q0. So how many inputs are there? For Q2, JK input, J2, K2, ये 2 यहाँ पे लिख दिया है, okay? J2, K2. For Q1, J1, K1, and for Q0, J0, K0. Yes or no? Yes ma'am. Okay. Now, how we will fill up this one? So first, you have to know this excitation table. So what do you mean by excitation table? If the present state is given, if the next state I want, then what should be the inputs that we will know from the excitation table. यहाँ पे देखो, अगर हम लोग बी फ्लिप फ्लॉप में भी यूज कर सकते हैं, एसआर फ्लिप फ्लॉप पे भी यूज कर सकते हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप पे भी यूज कर सकते हैं, टी फ्लिप फ्लॉप में भी यूज कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हमने जेके यूज किया है तो वी विल चेक दैट पार्ट। प्रेजेंट स्टेट अगर 0 है, नेक्स्ट स्टेट अगर 0 आएगा तो मेरा जे और के क्या होगा? देखो यहाँ से क्या होगा? क्या होगा बोलो? J will be 0 and K will be 0 and 1.
So that is zero don't care. Have you understood? Yes, ma'am. तो अगर मेरा प्रेजेंट स्टेट जीरो है, नेक्स्ट स्टेट वन आएगा, सो इन विच कंडीशन? वन डोंट केयर. वन मतलब सेट करने से भी आएगा, नहीं तो हाँ सेट करने से आएगा, वन जीरो कंडीशन में आएगा, नहीं तो वन वन. जो ये वन वन कंडीशन में क्या टॉगल आता है? जेके का टॉगल आता है कि नहीं वन वन कंडीशन में? हेलो. Yes, ma'am. तो ये अगर जीरो है तो वन लाने के लिए वन वन कंडीशन हम ले सकते हैं फॉर टॉगलिंग कंडीशन, नहीं तो एस को भी वन करने से हमारा वन आ जाएगा. सो दैट इज वन डोंट केयर. फिर अगर वन था तो जीरो होगा, तो वो क्या होगा? वन वन टॉगल कंडीशन होगा, नहीं तो के को वन करने से भी हमारा जीरो आएगा. सो दिस इज द कंडीशन इज डोंट केयर वन. देन अगर वन था वन रहा है तो मेमोरी जैसे बिहेव करेगा जीरो जीरो में, नहीं तो वन करने से भी हमारा सेट कंडीशन आ जाएगा, वन आ जाएगा. सो दैट इज डोंट केयर जीरो. सो हैव यू अंडरस्टूड? अगर प्रेजेंट स्टेट इज गिवन, नेक्स्ट स्टेट इज दिस we want, then what should be the inputs? So can you find out from the excitation table, yes or no? Yes, ma'am. So now we are applying here. मैं इसको इरेज कर देती हूँ. Okay. So in this diagram, Q2, this is Q2. यहाँ पे भी हम Q2 को एनालिसिस कर रहे हैं. तो देखो Q2 का प्रेजेंट स्टेट क्या है? बोलो. Zero. नेक्स्ट स्टेट क्या है? Zero. तो J2 K2 क्या होना चाहिए? Zero don't care. व्हाट इज दैट? Q1 का प्रेजेंट स्टेट क्या है? Zero. Q1 का नेक्स्ट स्टेट क्या है? Zero. तो J1 K1 क्या होना चाहिए? Zero don't care. Q0 का प्रेजेंट स्टेट क्या है? Zero. नेक्स्ट स्टेट क्या है? One. तो J0 K0 क्या होना चाहिए? One don't care. ओके. तो लाइक दिस, ये भी देखो Q2 जीरो है, ये जीरो है, सॉरी Q2 जीरो ये है, ये भी जीरो है, तो जीरो डोंट केयर. ये जीरो है, ये वन है, तो वन डोंट केयर. ये वन है, ये जीरो है, दैट इज डोंट केयर वन. सो लाइक दिस कैन यू कंप्लीट दिस टू टेबल, एक्साइटेशन टेबल? Yes, ma'am. नाउ अभी हम लोग को क्या करना है? J2, ये तो आउटपुट है ना मेरा, ये जो इनपुट है वो इनपुट को मैं सर्किट में डालूंगी. क्या एक्चुअली सिंक्रोनस में क्या होता है, क्या इनपुट दूंगी सो दैट कि मेरा स्टेट चेंज होगा. तो ये इनपुट के लिए मुझको एक्सप्रेशन निकालना है फ्रॉम दिस स्टेट्स. ओके. तो यहाँ पे J2 के लिए इनपुट क्या होगा? Q2 Q1 Q0. तो J2 का के मैप में डाल के मुझे J2 का एक्सप्रेशन लाना है इन टर्म्स ऑफ K2 Q2 Q1 Q0. K2 का भी के मैप पे डाल के एक्सप्रेशन लाना है. सो लाइक दिस के मैप फॉर ऑल 6 इनपुट्स. अभी यहाँ पे देखो J2 में कहाँ पे वन है, कौन से पोजीशन में वन है? J2 3 में वन है, ठीक है नहीं? J2 वन कौन से पोजीशन पे है? Third position. थर्ड पोजीशन पे. बाकी तुम्हारा टोन क्या है? तो वहां पे देखो, यहाँ पे वही थर्ड पोजीशन 0 1, यहाँ पे लिया होगा शायद 0 1 2 3. तो थर्ड पोजीशन में वन है, बाकी सब डोंट केयर है. सो बाय यूजिंग दिस वन इट इज गेटिंग द के मैप ग्रुप ऑफ 2. So like this, J1 का एक्सप्रेशन, J0 का एक्सप्रेशन, K2 का एक्सप्रेशन, K1 का एक्सप्रेशन, K0 का एक्सप्रेशन. You have to find out how many outputs are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
So you have to find out through all the 6 expressions. Okay. So that 6 expression we are getting here. Finally, I am getting J0 and K0. J0 भी 1 आएगा. J0 देखो सारा अगर फिल्ड अप है तो J0 का वैल्यू क्या आएगा? 1. सारा फिल्ड अप है तो क्या आएगा? 1 आएगा कि नहीं? Yes, तो ma'am. J0 1, K0 भी 1. देखो K0 भी सारा फिल्ड अप है. That is 1. J1 and K1 both are Q0. देखो ये पूरा 4 फिल्ड अप है, ये भी सेम 4 फिल्ड अप है. That's why J1, K1 is Q0. And J2, K2 ये भी 2 है, ये भी वही 2 है. तो Q1 and Q0. Okay? अब डिजाइन क्या करना है? हम लोग क्या डिजाइन किए थे? 3 फ्लिप फ्लॉप जो मैंने ड्रॉ किया था. J0 मतलब एक फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, सेकंड फ्लिप फ्लॉप, थर्ड फ्लिप फ्लॉप. ओके. तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, नहीं तो J2, J1, J0 वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके. तो वी हैव टू एक्चुअली डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू. अगर ये तुमको कंफ्यूजन लग रहा है, यहाँ पे मैं खुद से ड्रॉइंग कर लेती हूँ. ये है तुम्हारा J2, K2. ये है तुम्हारा J1, K1. ये है तुम्हारा J0, K0. ओके. तो J2, K2 ये होगा तुम्हारा Q2. ये होगा J1, K1. ये होगा तुम्हारा Q1. एंड J0, K0 दैट इज Q0. दिस इज Q0. ओके. अभी देखो, दिस इज सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस सर्किट और हमारे काउंटर. सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस. हेलो. Asynchronous circuit. एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? Synchronous circuit. सिंक्रोनस सर्किट मतलब साइमल्टेनियसली सबको एक साथ क्लॉक दिया जाएगा. सो फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज द क्लॉक. तो इसको पॉजिटिव एज, इसको पॉजिटिव एज, इसको भी पॉजिटिव एज, सबको एक साथ दिया जाएगा. व्हाट डू यू मीन बाय एक साथ? सारे का जो कनेक्शन है दैट विल बी कनेक्टेड टू द क्लॉक. तो क्लॉक के साथ होगा CLK. मतलब when clock is applied, that will be applied to here, here and here. अभी जो इनपुट होगा वो कैसे होगा, वो डिपेंड करेगा एक्सप्रेशन से. अभी ये J0, K0 है. J0, K0 को क्या होना चाहिए? 1. मतलब तुम एक 1 लिखोगे और that 1 is connected to here as well as here. Then J1, K1 क्या होना चाहिए? Q0. ये है तुम्हारा J1, K1. ये Q0 को तुम ऐसे लाके ऐसे कर सकते हो. J1 भी कनेक्टेड है, K1 भी कनेक्टेड है. और J2, K2 क्या है? Q1, Q0 का AND गेट. ये तुम्हारा Q1 है, ये Q1 का आउटपुट, Q0 का आउटपुट, दोनों को लाके AND गेट बना के इसका आउटपुट दैट इज द इनपुट फॉर द J2 as well as K2. Have you understood? Have you understood? Or any doubt? Tell me. Ma'am, circuit is not clear. Okay, no problem. ऐसे बताऊं. Okay. खुद ट्रेन कर देती हूँ. Okay. यहाँ पे एक्चुअली 3 कितना फ्लिप फ्लॉप है? 3 flip flop. तो पहले without knowing anything you just draw 3 flip flops. Yes or no? So flip flop ये फ्लिप फ्लॉप दिख रहा है या क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है तुमको? Yes, ma'am. 3 flip flop. हाँ है. ये बॉक्स है या फ्लिप फ्लॉप है? Box. तो फ्लिप फ्लॉप कैसे बोल रहे हो?
तो Design. इसको अगर मैं फ्लिप फ्लॉप बोलूंगी तो क्या आइदर जेके होगा, नहीं तो बी होगा, नहीं तो सी होगा, कैसे नो। यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, जेके। अगर जेके होगा तो इनपुट में मेरा कैसे लिखूंगी, ये Q2 अगर लेती हूँ तो दिस इज J2, दिस इज K2। आउटपुट क्या आएगा, Q2 एंड दिस वन इज Q2 बार। यस और नो। Yes, ma'am. तभी जाके ये फ्लिप फ्लॉप बनेगा। Mm-hmm. उसके साथ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज द क्लॉक। क्लॉक नहीं है तो ये फ्लिप फ्लॉप नहीं है। ओके, तो ये तुम्हारा क्लॉक है। तो दैट इज द फ्लिप फ्लॉप 2, FF2। नेक्स्ट FF1 क्या लिखूंगी, J1, K1, K1 and Q1, Q1 bar. Q1 bar. This is J0, K0 and Q0 bar. Q0 bar. Yes or no? Yes, ma'am. इसका भी क्लॉक है, इसका भी क्लॉक है। And this is synchronous. So you just connect all the clock. Okay. So before I am entering to the state diagram and whatever I have done, initially you have to do this. Have you understood? मतलब तुम्हें कुछ तुम नहीं जानते हो, प्रेजेंट स्टेट क्या है, नेक्स्ट स्टेट क्या है, मुझे नहीं पता। जस्ट 3 बीट काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर। 3 बीट मतलब और कौन सा फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, तो मैं ऐसा ही डिजाइन कर लूंगी। गॉट इट? Yes, ma'am. अभी इसको मैं क्या इनपुट दूं जो कि मेरा आउटपुट ये निकलेगा। सो इनपुट जो देना है दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। इन द एक्साइटेशन टेबल में तुमको क्या मिला, इनपुट का एक्सप्रेशन मिला कि नहीं। तो Yes, वो इनपुट तुम डिजाइन करोगे, कैसे करोगे, देखो फर्स्ट तुम्हारा क्या है, J0 K0 = 1 मिला कि नहीं एक्सप्रेशन से। तो J0 K0 1 मतलब हम लोग कैसे देंगे, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। दैट इनपुट इज फीड टू हियर एज वेल एज हियर। नेक्स्ट वन इज J1 K1 क्या है, Q0 है। सो अगर Q0 है तो ये आउटपुट Q0 है। दिस आउटपुट इज कमिंग एज द इनपुट टू बोथ J1 as well as K1. Then J2 K2 क्या है, Q1 Q2 Q0 का AND गेट है। तो दिस इज Q1 एंड दिस इज Q0। तो ये दोनों का AND गेट J2 में जाएगा। J2 एंड K2 में जाएगा क्योंकि Yes, दोनों सेम है। ये J2 है, सेम तुम्हारा K2 पे भी जाएगा। So this is the design of the 3-bit synchronous counter. So ये ऐसा हम डिजाइन करने में, अगर इस टाइप का डिजाइन को हम एनालिसिस करेंगे तो वो क्या क्या काउंट करेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7। हम लोग लास्ट क्लास में एक काउंटर लिए थे, उसका एनालिसिस किए थे। अभी मेरा आउटपुट मुझे जो चाहिए उसके हिसाब से मैं डिजाइन कर रही हूँ। अब यू अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके, ये हो गया मेरा 3 बिट। और उसमें मेरा देखो ये तुम ऐसे मैंने जब काउंट करोगे तो ऐसा ही आएगा। ये 4 बिट का लिया है। ओके, तो ये देखो भी हम लोग जो किए थे ये मतलब ऐसा लिया है, मतलब J2 यहाँ पे लिया है, J0 यहाँ पे लिया है। वो क्या किया है, J0 K0 को देखो 1 लेके कनेक्ट कर दिया है, Q0 को यहाँ पे J1 K1 में कनेक्ट किया है, Q0 एंड Q1 को लेके एंड गेट में डाल के उसका जो आउटपुट है वो J2 K2 को दिया है। बाकी क्लॉक पल्स सबको एक क्लॉक पल्स बना दिया है। और Q बार वो नहीं दिया है, वो डिपेंड अपन तुम्हारे पर डिपेंड करता है, बट दिस इज द डिजाइन सर्किट। हैव यू अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके,
अच्छा अभी क्या है कि 3 बिट जब लिए तो कितना काउंट किया, अप टू 7। लेकिन मैं अगर चाहती हूँ कि मॉड 6 काउंट करेगा, मॉड 6 मतलब क्या, कितना तक काउंट करेगा, मॉड 6 मतलब वो कितना तक काउंट करेगा? हम्म? मतलब नहीं समझ में आया। अरे नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये कि अगर 3 बिट यूज कर रहे हो तो वो क्या क्या काउंट कर रहा है, कहाँ तक? 7 तक, 0 to 7। 7 तक काउंट करे। लेकिन मुझे चाहिए मॉड 6 काउंटर डिजाइन करना है जो काउंट करेगा 0 to 5 तक। मॉड 6 मतलब स्टेट्स वो काउंट करेगा, 6 स्टेट्स मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 0, सो इट विल बी काउंटिंग फ्रॉम 0 to 5। तो 0 to 5 मतलब वो क्या करेगा, 3 बिट है तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 फिर हमारा 4 आएगा 1 0 0, देन 5 आएगा 1 0 1, देन 6 क्या आएगा 1 1 0। 1 1 0। लेकिन एक्चुअली मॉड 6 मतलब वो 1 0 1 के बाद वो क्या काउंट करेगा, फिर 5 तक जब काउंट करेगा तो मैक्सिमम तो 5 है, तो 5 तक जब काउंट कर लिया फिर क्या काउंट करेगा, 0 0 0। 0। लेकिन नॉर्मली में वो आ रहा है क्या, 1 1 0। 1 1 1। 5 के बाद 6 आ रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है, 5 के बाद जो 6 आया है वो 6 को 0 करना है। अब यू अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, एक्चुअली नॉर्मली में 5 के बाद तो 6 ही आता है, लेकिन मैं उसको जबरदस्ती में क्या कर रही हूँ, मुझे चाहिए सिर्फ 5 तक काउंट करेगा, मतलब 5 के बाद वो 6 काउंट नहीं करेगा, 0 काउंट करेगा। इसीलिए उसका जो डिजाइन है, तो मैं तब क्या करूंगी, जो प्रेजेंट स्टेट अगर मेरा 5 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या आएगा, क्या आएगा 6। नेक्स्ट स्टेट 6 आएगा। 0 0 0। हाँ व्हाट इट, उसका जो पीपीटी है तो वही ढूंढ रही हूँ। अगर प्रेजेंट स्टेट जब 5 आएगा 1 0 1 आएगा तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा 0 0 0। जो मैं तुमको जो भेजी हूँ, जो पीपीटी भेजी हूँ, जो काउंटर किया उसमें मॉड 6 सिंक्रोनस काउंटर है, तो वो तुम देख सकते हो। उसमें क्या है कि ट्रंकेटेड काउंटर, मतलब अगर पूरा 7 तक जाता है तो हम लोग तो बना दिए, लेकिन अगर 7 तक काउंट नहीं करेगा तो 5 तक काउंट करेगा, सपोज 6 तक काउंट करेगा, सपोज 7 काउंट करेगा, तो उस केस में क्या होगा, जब अगर मेरा जो स्टेट है जहां तक वो काउंट करेगा उसके बाद वो 0 0 कर देगा। देखो ये एक दूसरा, इज इट विजिबल? यस मैम। तो देखो ये और एक मैंने दिखाया है कि 3 बिट बाइनरी ऑफ काउंटर, वो भी मेरा ऑफ काउंटर था, बट दैट वाज यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप, एंड दिस वन इज यूजिंग व्हिच फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप। तो उसमें तुम क्या दिखाओगे, वैसे ही प्रेजेंट स्टेट करोगे, नेक्स्ट स्टेट करोगे, लेकिन यहाँ पे टी इन सिंगल इनपुट और डबल इनपुट, सिंगल इनपुट। सिंगल इनपुट, इसीलिए इसमें TA2 जो हमारा Q2 Q1 Q0 था यहाँ पे लिया गया है A2 A1 A0। सो इसका भी इनपुट है सिंगल इनपुट TA2 TA1 TA0। सो वही एक्सप्रेशन लिया है और इसका वो मतलब ड्रॉ किया है। देखो हम लोग जैसे जेके किए थे, इसका सिर्फ सिंगल इनपुट का किया है, एंड गेट लेके ऐसा किया है, इसको QA0 से कनेक्ट किया है एंड दिस इज 1 को कनेक्ट किया है। Got it? यस मैम। और अगर इसका हम अगर जो आउटपुट वेवफॉर्म देखेंगे तो कैसे देखेंगे, ये क्लॉक पल्स के हिसाब से देखेंगे। पॉजिटिव बेस क्लॉक पल्स हम लोग दिए हैं,
तो इस क्लॉक पर पॉजिटिव एज से इसका आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट जो वेव फॉर्म, जैसे हम लोग एनालिसिस किए थे एसिंक्रोनस में, वैसे ही एनालिसिस करेंगे आफ्टर डिजाइनिंग दिस सर्किट। ठीक, तो फिर इसके बाद देखो ये तुम्हारा जो मैं बोल रही थी मॉड 6 काउंटर। सो मॉड 6 मतलब काउंट करेगा 0 to 5। तो यहाँ पे देखो जो स्टेट्स विथ 3 बिट्स थे, सो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 के बाद नेक्स्ट स्टेट क्या होता है, देखो नेक्स्ट स्टेट क्या होता है, 0 0 0। हाँ ये तुम्हारा स्टेट डायग्राम 0 0 देखो 1 0 1 के बाद नेक्स्ट स्टेट 0 होता है। तो एनी मॉड आएगा मतलब मॉड 7 होगा, तो वो काम क्या करेगा 0 to 6 काउंट करेगा, 6 के बाद क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेट अगेन 0 0 0। 0 0 0 हो जाएगा। तो ये प्रेजेंट स्टेट है, ये नेक्स्ट स्टेट है, अकॉर्डिंगली यू विल डिजाइन द सर्किट। ओके, तो तुमको सब जानना है कि प्रेजेंट स्टेट मेरा क्या है, नेक्स्ट स्टेट मेरा क्या आना चाहिए, उसी हिसाब से तुम इनपुट को डिजाइन करोगे। अंडरस्टूड? यस हेलो, मैम। ओके। Yes. तो ये तो पीपीटी में भेजी हूँ, तुम इसको अच्छी तरह से देख लेना, अगर कोई डाउट होगा तो पर्सनली पूछ सकते हो। ओके, तो ये 3 bit, so like this 4 bit 5 bit you can do this. Then come to shift register. So just elaborately I am explaining what is shift register. ये मैंने जो 3 बिट का जो सीक्वेंस है ना, जो सिंक्रोनस काउंटर का, वो वेबफॉर्म मैंने ऐसा जस्ट ड्रॉ कर दिया। ये है तुम्हारा सपोज पॉजिटिव एज हम लिए हैं, अगर नेगेटिव एज होगा तो क्यू ए लाइक दिस, क्यू ए का जो क्या पॉजिटिव एज पे, सॉरी ये है नेगेटिव एज वाला, तो इसका नेगेटिव एज पे ये एक्टिव होगा, इसका नेगेटिव एज पे ये एक्टिव होगा। तो सीक्वेंस क्या क्या दिखाएगा, देखो 0 0 0 ये होके फाइनली 1 1 1 दिखाता है, फिर 0 0 0 दिखाता है, 1 1 ऐसे कंटिन्यू करता है। एवरी साइकिल में तुम लोग चेक करोगे व्हाट इज द आउटपुट। तो ये डायग्राम तुम्हारा आएगा आफ्टर डिजाइनिंग द सर्किट of the 3 bit synchronous counter. If the question is that draw the output waveform, so this should be the output waveform. Clear? Yes Clear? ma'am. Okay. Next come to our last part, that is the shift register. So first one is, what do you mean by register? Register क्या है? Register is to store the number of bits. Okay? 8 bit register, 32 bit register, 64 bit register, मतलब वो जो सर्किट है वो स्टोर करेगा 32 बिट या 6 बिट या 8 बिट, दैट इज स्टोर। तो as we know that 1 bit is stored by how many, which device is used to store 1 bit? Which device? Flip flop. Flip flop. So one register is 8 bit register, that means 8 flip flops are connected to each other. If it is 32 bit register, that means 32 flip flops are there. Okay. Then next one is shift register. What do you mean by shift? That means whatever the content of that flip flop, that it is shifting from one flip flop to other flip flop. It can be right shift, it can be left shift. If it is right shift, then that type of shift register is known as shift left register, and if the contents are left shift, that one is known as the left shift register. So what is the meaning of this? I am showing here concept. Suppose the bits are 3 bits, just as I have told. So 0 0 में confuse हो जाओगे. Suppose 0 0 0 1. ठीक. तो अगर right shift हो रहा है, तो राइट शिफ्ट मतलब क्या होगा, अगर एक बिट ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये आउट होगा। तो ये जो पोजीशन था, इसका जो पोजीशन ये था, अभी कहाँ शिफ्ट हुआ, राइट शिफ्ट हुआ। यस और नो? सपोज अनदर बिट आई एम टेकिंग 0 1 1 0,
तो अगर मैं पल्स अप्लाई करती हूँ तो ये 1 बिट शिफ्ट राइट होगा, मतलब ये जो पोजीशन था, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये 1 बिट शिफ्ट राइट मतलब दिस बिट ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। अगर लेफ्ट शिफ्ट मतलब just in this direction. Have you understood what do you mean by right shift? What do you mean by left shift? Hello. यस मैम। So बट actually मैम फर्स्ट वाला का फिर पोजीशन क्या हो? फर्स्ट वाला भी वही है। स्टार्टिंग का हाँ देखो, एक्चुअली concept is that ये flip flop, this one is flip flop, this one is flip flop, this one is flip flop. Initially suppose 0 0 0 0 होता है। If the bits are applied here, then ये जो bit आया, फिर ये अगर राइट शिफ्ट होता है मतलब इसका कंटेंट इसको जाता है, इसका कंटेंट इसको जाता है। मतलब फर्स्ट कैसे बने अकॉर्डिंग टू द क्लॉक पर, वो कैसे देखेंगे हम वो वाला। तो वो है शिफ्ट रजिस्टर, देन शिफ्टिंग मतलब आइदर राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। ओके, देन there are basically 4 types of shift register. One is serial in, serial out, which is known as SISO register. That means serially we are entering to the data and serially we are out the data. So basically these flip-flops are used for the register, shift register cases. Okay, if we are analyzing this flip-flops, okay, or 4 bit, तो अब यहाँ पे एक 3 बिट का डायग्राम कौन सा दिया गया है देखने के लिए। ओके, सो यहाँ पे एक डाटा लिया है 1 1 1 1, सीरियल सीरियल इन पैरेलल, सॉरी सीरियल इन सीरियल आउट, बिकॉज आवर डायग्राम इज दिस वन, क्योंकि वो बोल रहा है कि 4 टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर, दैट इज सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, another is parallel in parallel out. Okay, so what is the meaning of this? Any flip flop, suppose I am using a 3 bit shift register or I am using a 4 bit shift register, so the data are entering serially. So data मतलब अगर आएगा 1 0 1 0, डाटा अगर आएगा तो सीरियली आएगा। तो सीरियली जब आएगा, ये फ्लिप फ्लॉप है बेसिकली, दिस इज डी फ्लिप फ्लॉप, दिस इज डी, दिस इज डी। तो डी का आउटपुट क्या होता है? डी का आउटपुट क्या होता है? अरे डी का आउटपुट क्या होता है? जो इनपुट होता है, यस और नो? दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डाटा फ्लिप फ्लॉप। हेलो हेलो, यस मैम। तो डाटा फ्लिप फ्लॉप यस मैम। What if the data is given to the input, then we are getting the same output. Okay, तो यहाँ पे देखो, अगर ये सारे synchronous flip flop है, so clock pulse are applied simultaneously. हम लोग ऐसे डिजाइन करेंगे। So here it is saying that when first clock pulse is applied, first clock pulse जब होगा, तो ये डाटा कहाँ किस फ्लिप फ्लॉप को एंट्री करेगा? ये मैंने सपोज लिया है D2, ये D1 है, ये D0, तो कहाँ पे एंट्री होगा? D2 में। D2 में। तो D2 का कंटेंट क्या है? अब देखो ये तो 0 है तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। सपोज 1 1 1 1 देती हूँ, 1 1 1 1 देती हूँ। अच्छा, तो इनिशियली क्या कंटेंट क्या है मेरा? इनिशियली आई एम एज्यूमिंग Q2 is 0, Q1 is 0 and this one is 0. Initially I am assuming content क्या है? वो 0 0 0 है। तो जब when I am applying the first clock pulse, then first data is entering to D2 flip flop. Yes or no? Yes ma'am। Hello. Yes so ma'am। if the first data is entering to the, अगर first data D2 को आएगा तो Q2 क्या होगा? 1
If D2 is 1, that is Q2. Very good. So first clock pulse में Q2 यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ तो Q2 1 Q0 Q2. तो first clock pulse में Q2 क्या है? 1. I mean, but what are Q1 and Q0? 0, 0. Ma'am, your voice is not clear. Hello. Now audible. Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. Now audible. Okay. So first I'm saying that I'm assuming that initially the output of the figure 0, 0, Not 0. clear, ma'am. Not clear. Okay. Initially, Yes, ma'am. Audible, but not clearly. okay, just try to understand because already I have so you can go through that in any book. So here the concept at the way is the figure corrected and data is given, that means one by the data is given and we are getting output. हम लोग output serial output, that means output we are getting at which Q0 or Q1 Q2. Hello. Hello. So, Yes, ma'am. Audible, but not clear. sending the full claim, those are just explain also and sending full claim. Trying to change network is so okay, I have sent the quiz link.
So those are interested, they can just listen this one, and the others do, because this is the last class, so I'm explaining this one. So first is serial in, serial out. Okay. So now voice is audible properly. Ma'am, that link is not working. Link is not working. No, ma'am, it should no longer. Acha. Okay. Okay. Now do. Yes, ma'am. So here the seat register is SISO, that is serial in, serial out. That means in this diagram, 4 flip-flops are there. All are connected to each other, and simultaneously the clock pulse is applied. So if we are giving the input to the first one, then we are giving the input to the first one. Here serially we are giving the input to the first one. So actually the serially हम लोग जो आउटपुट देखेंगे, हम लोग कहाँ पे फाइनली देख रहे हैं आउटपुट? फाइनली कहाँ पे आउटपुट देख रहे हैं? बोलो क्यूज. ये है तुम्हारा D3, D2, D1, D0. So we are taking the output at which queue? हेलो, अरे कहाँ पे देख रहे हैं? कौन सा क्यू पे देख रहे हैं? Are you listening or not? हेलो सौम्या, Yes, ma'am. हम क्विज वाला सॉल्व करना है. वो क्विज बाद में करके कंप्लीट कर लेना, वो तो मैं ये करूंगी, ऑन रखूंगी. उसको क्विज बाद में भी कर सकते हो, वो लिंक मैंने दे दिया, तुम बाद में सबमिट करना है. अभी पूरा सुन लो. तो यहाँ पे इस डायग्राम में, ये डायग्राम में देखो, इफ आई एम गिविंग द इनपुट एट दिस साइड, सो सीरियली, सो इफ द डाटा इज वन, Your screen is not visible. Ma'am, your screen is not visible. Oh, that means due to the network problem. Now it's visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So here what it is saying, that means serial in, serial out is shift register. So what do you mean by that one? We are giving the serial input data to the one side of the flip-flop. And shift register, suppose n bit shift register, that means n flip-flop. Here it is 4-bit shift register, that means 4 flip-flops. So which flip-flops we are using? D flip-flops. Okay. Because it is storing the data. Whatever the data, that is the output. That's why basically for register we are using D flip-flop. So here we are giving the data to the first one. यहाँ पे हम लोग क्या डाटा दे रहे हैं? 1 0 1 0. So my question is that we are checking the output at this one. Tell me, here हम लोग output कहाँ देख रहे हैं? यहाँ पे? कैसे लोग यहाँ पे? या फिर कौन से फ्लिप फ्लॉप पे देखेंगे आउटपुट? हेलो, कौन से फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हम फाइनली देखेंगे? Last one. लास्ट वाले. तो अगर हम फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, क्लॉक पल्स जब दिया जाएगा, so this one will be activate. तो this one activate मतलब फर्स्ट डाटा कहाँ पे जाएगा? इसको जाएगा. उस टाइम पे ये तुम्हारा प्रीवियस डाटा कैरी होके रहेगा, उसका चेंज नहीं होगा. फिर
जब नेक्स्ट डाटा इसको जाएगा तब इसका डाटा इसको जाएगा और ये तुम्हारा एज यूजुअल रहेगा। फिर जब नेक्स्ट डाटा इसको जाएगा तो ये सेकेंड डाटा इसको जाएगा और ये डाटा इसको जाएगा। फिर जब ये डाटा यहाँ पे आता है तो ये वाला यहाँ पे जाएगा, ये वाला यहाँ पे जाएगा, ये वाला यहाँ पे जाएगा। मतलब तुम्हारा कंटेंट 1 0 1 होने के लिए कितना फ्लिप फ्लॉप्स की जरूरत हुआ? कितना फ्लिप सॉरी 4 क्लॉक पल्स। अब अंडरस्टूड? फर्स्ट क्लॉक पल्स में फास्ट डाटा एंटर होता है फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को। सेकेंड क्लॉक पल्स में सेकेंड डाटा एंटर होता है फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को, फास्ट डाटा शिफ्ट होता है सेकेंड फ्लिप फ्लॉप को। ओके, so one just look at here. Initially all the contents are 0 0 0 0. In the when the first clock pulse is applied, fast data is entering to the first flip flop. Okay, and ये तुम्हारा shifted हो रहा है 1 bit shift right. फिर when second pulse, the second data is entering to the first flip flop. Always data किसको दे जा रहा है? Always data हम कहाँ पे दे रही हैं? हेलो, डाटा हम कौन से फ्लिप फ्लॉप को दे रहे हैं? फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को। लेकिन हम कहाँ पे डाटा चेक कर रहे हैं? लास्ट में। लास्ट में देख रहे हैं। तो सारे एक्चुअली आफ्टर गिविंग द 4 क्लॉक पल्स हमको कितना डाटा मिलेगा? क्योंकि हम फाइनली Q0 का आउटपुट देखते हैं, Q0 में आउटपुट देखते हैं। तो मेरा ये फर्स्ट वाला डाटा यहां तक आने के लिए कितना पल्स की जरूरत हुआ? 4 पल्स। 4 पल्स। तो अभी तक मुझे एक ही डाटा मिला है, बाकी ये 3 जब आएगा तो how many पल्स? अनदर 3 पल्स। ये शिफ्ट होके फिर यहाँ पे आएगा, ये शिफ्ट होके यहाँ पे आएगा, ये शिफ्ट होके यहाँ पे आएगा। सो अनदर how many पल्स? अनदर 3 पल्स के बाद फाइनली आई एम रिकवरिंग 1 1 1 1 because at the 4th clock pulse I am getting the contents are 1 1 1 1, but I am finding out the data from only Q0, not from Q1 Q2 Q3. जबकि मैं एक ही आउटपुट से निकल रही हूँ, इसीलिए मुझे 1 by 1 मुझे वही आउटपुट चाहिए। ऑल्दो मेरा सारे फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट आ गया है, लेकिन मैं आउटपुट कहाँ से ले रही हूँ? Q0 से ले रही हूँ। So in the serial in, serial out, I am giving all the data one by one. I am giving the data to Q3 or the first flip flop, and one by one it will be shifting 1 bit right, and I am getting the output at last flip flop after how many clock pulse? After 2 to the power n minus 1. यहाँ पे जबकि 4 फ्लिप फ्लॉप है तो 2n minus 1, तो 4 फ्लिप फ्लॉप है तो 2n कितना होगा? 2n is 16. नहीं 2 to the power n, yeah. नहीं 2 into n, 8. 8 minus 1, that is 7. So 7 clock pulse. After 7 clock pulse, I am getting all the output what I have fed to my input. Okay, so that is serial in, serial out. After 7 clock pulse, I am getting all the input data at the output by shifting 1 bit right. Another combination is SIPO, serial in, parallel out. So just serial in. So now tell me, if I am giving any data, so that data will be entering to the flippers by how many clock pulse? जाता है कितने फ्लिप फ्लॉप के बाद, सॉरी कितने क्लॉक पल्स के बाद?
4. वेरी गुड. तो 4 क्लॉक पल्स में मेरा सारा डाटा एंटर हो जाता है, लेकिन मुझे सीरियली यहाँ पे निकालने के लिए अनदर 3 क्लॉक पल्स की जरूरत है, जबकि मैंने सीसो का यूज किया था. लेकिन दिस वन इज अनदर टाइप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर दैट इज serially parallel out. So when all the data are entered to the flip-flop, parallelly I can get all the data output. तो कितना flip-flop, कितना clock pulse में मेरा आउटपुट आ जाएगा? कितना clock pulse में? 4 clock pulse में, क्योंकि 4 clock pulse में data is entering to the flip-flop. So data is entering to the flip-flop means output is already ready. लेकिन हम सिर्फ Q से देख रहे थे, Q0 से देख रहे थे, so that's why another 3 clock pulses are required. But here we are individually at output of individual flip-flop we are checking the output. So only 4 clock pulses is required. Have you understood? Have you understood? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. So this is serial in, parallel out. Like this, parallel in, serial out. That means simultaneously you are giving the input, but serially one by one it will be shifting and you are getting the output. एक साथ input देंगे, लेकिन सारे input एक साथ नहीं निकलेगा, वो one by one यहाँ पे output निकलेगा. So this is your parallel in, serial out condition. Another last one is parallel in, parallel out. Simultaneously हम लोग input देंगे, simultaneously हम लोग output भी देखेंगे. So there are 4 types of shift register. So how many clock pulse for this type, how many clock pulse for that type, that you have to know. So with example, with problems and example, all the shift registers are explained here. I have already sent this PPT, so go through that one, and any in between any query is there, you can contact me also. Okay. Okay, thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, good afternoon, students. Am I audible to you all? Yes, sir. Am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Just a second. Yes. So a very small topic had been left out from our discussion, which is clustering. Okay. So today we are going to discuss clustering, which is a greedy approach. Okay. So basically, this you have to understand what this clustering problem means, and once you understand this problem, then the solution you already know. Okay. So let us understand this problem of clustering. Okay. Yes. Clustering always arises whenever one has a collection of objects. Okay. Suppose you are doing a Earth observation, or this is a Earth observation satellite. Okay. So what this Earth observation satellite is doing, it is looking at clusters, and then it is trying to find out. So if there is one cluster here, there is another cluster here. So possibility is there that this is one solar system, and this might be another solar system. Okay.
So whenever you have a group of objects, in those situations, we need to cluster the things. Okay. So how can you identify a cluster? So the property of the items that are present within a cluster is that items within a cluster are close, okay, to each other. Then two items in two different clusters. Yes. So what does this mean? Okay. We have a cluster of items here. We have a cluster of items here. So this is cluster 1. This is cluster 2. Okay. So now if I say that all the items that are present, all items that are present within a distance d from each other, then all those items belong to one cluster. Okay. So therefore, the distance between these two, or these two, any two elements inside a cluster is always less than or equal to d. But now if you take the distance between two clusters, okay, I mean two elements that are belonging to different clusters, these two, then definitely the distance will be greater than d. And from this itself, we can identify how many objects are belonging to a particular cluster. Okay, so that is how we actually identify the clusters based on a threshold distance d. Okay, so yes, let us understand using another example. So if I say, yes, now if I say, now this is a Petri dish, okay, the one that is used for biological experiments. Okay, inside that I have some organisms here, I have some organisms here, and I have another set of organisms here. Yes. So basically the point here is the point to make is all the clusters will have a similar property. So might be all these are viruses, all these are bacteria, and all these are fungi. Therefore, they are present in a cluster. So the point is the items that are belonging to a cluster, for example, our solar system objects. So all these planets that are belonging to a particular solar system will be governed by the same properties as our sun. Okay. So we can take the example of any group of objects which we want to classify. Okay. So here the fungi will have, all the fungi will have similar properties. But now if you take one item from here and another item from here, and you try to compare them, definitely a fungi is different from a bacteria or a bacterium. Okay. So in that case, you can say that yes, a fungus is different from bacterium. Therefore, the clusters, the inter-cluster relationship is different, while the intra-cluster relationship is same. That means all the objects that are present within a cluster will always constitute of similar property. However, the objects that are present in another cluster will constitute another set of properties. So let us understand this with another set of examples. Now, some of you might be having phones where when you take the images, you open the recent folder. Okay. So the images are placed like this.
the gallery images, the camera gallery images. Okay. Okay. But if you just change the view from recent to albums, okay, then you will see that a folder called selfie will be created and all the selfies will be present there. From here, the classification will happen and all the selfies will be present there. So suppose you have gone to some place, okay, so the place is Chilika, suppose, okay, and all the images that were taken at this place will belong to this folder. Yes, this happens or not? Yes. So if you see all these images, they are taken by the front camera. Okay. Basically, they are consisting of one person images. Okay. So this is how the classification has been done. Here, you look for a location tag. Okay. And all the images that match this location tag are placed into a cluster. Okay. So basically, when you are trying to cluster a group of objects, you will always look for similar properties and place them together. Okay. And this clustering technique, this can be used in places where there are a group of objects. Okay. A set of graphs, documents, or microorganisms. Okay. That one is trying to classify or organize into a coherent group. What is coherent? Coherent means properties are same. Properties of each element is more or less same. Or you can write similar. Okay, more or less similar. So, faced with such a situation, it is natural to look first for measures of how similar or dissimilar each pair of object is. Okay, so now let us take and see how we can classify. Okay, let me take one example. Okay, now from this, I have one apple here, one orange here, one banana here. Okay, so now the first thing that you will try to do is try to see if this fruit matches this fruit or not. If A is equal to O, that means apple is equal to orange, then these two are only one set. Okay, but since they are different, now A will be compared with B. So they are also different. Okay, so now A itself will constitute one cluster. Okay, all the types that are similar to A will be put here. Okay, similarly, now we are left with O and B. Okay, orange and banana. Now we will compare one orange with a banana and you will see that their characteristics will not match. Therefore, orange is also not equal to banana. Now we have already seen apple is not equal to orange and apple is not equal to banana. Therefore, apple is set 1, and since these two are distinct, these two will also become our set 2 and set 3. So similarly, from this example itself, there may be a number of apples, orange, bananas, all those things that will be there. Okay, from this you have to now classify and place this. I have actually image for this. Yes, this is the image. So what I can do, this is one of the techniques of classification where I will compare one item with every other item that is present. So from here, I got one type of item. This is another type of item. All the similar characteristics items will be placed in this cluster only. And similarly, we have this third item, which is strawberry, which is different from a pear or an apple. So that is why the strawberry, all the strawberries, they will become the third cluster. Okay. So given a number of items, now you can always create clusters. Okay. Yes. Yes, this is the concept when you look for a threshold distance. If the distance is less than D, they are all present within a cluster. Distance less than D, all present within a cluster. Distance less than D,
all present within a cluster. But one element from here and another element from here, if they are compared, then the distance will be greater than d. So definitely this element and this element, they belong to different clusters. Okay, so this is how you can look for clusters based on Euclidean distance. So based on the Euclidean distance now, I have found out how many clusters are there, and according to the property that all the elements should be having a Euclidean distance less than d, I have now placed them into 3 different clusters. Okay. Now this is the second type of clustering where we want to say that clusters will not always originate in a circular manner. They can be of different shapes and sizes. Okay, not necessarily that every cluster will be circular in shape. Okay, we may get different clusters and you might be asked that, yes, differentiate this cluster. Now, in places where you cannot apply Euclidean distance, there we can go for density based clustering, or for that matter, this can be any parameter x that differentiates these elements with these elements. Okay, so here we have shown a density based clustering. So this density, so if I take a glass, okay, I put water and I put oil. So in this case, if you see, there will be 2 different clusters, okay, based on their density. Okay, so yes, clusters not necessarily will originate in a circular manner. Okay, so this is called as partition based clustering. In the partition based clustering, we can divide the cluster of elements from another through a plane. Okay, this is not a line, this is a plane. Okay, so if a plane in 3 dimensions can differentiate the clusters, then we can say that yes, this is a partition based clustering. Yes, this can happen in molecules which have crystalline structures. Okay, if you have a multi-element molecule, okay, so in that matter, if you want to differentiate all the carbon particles, all the hydrogen particles, all the magnesium particles, then you can look for a crystalline structure. I don't know if this contains a crystalline structure or not, but all those elements which have a crystalline structure, they can be partitioned on a plane. Okay. Now this we have already explained. This is property based partitioning or property based clustering. All the elements here, we do not have a Euclidean distance, we do not have a partition plane, we do not have density. So how are we going to differentiate these elements? These elements can be differentiated based on their property. Apple is not equal to orange, is not equal to pear. Okay, so yes, anything you can take. Okay, if you look at the problem, and if the problem has some property such as density difference, then you can use density based clustering. If it does not have anything, you have to go for similarity based or property based clustering. Okay, so all those things you have to look for when you are going for a clustering algorithm, and you are going to see
which type of clustering is better fitted. Okay, so if I just give the definition, I mean the partition types, they are partition based clustering, density based clustering, distribution based clustering. So some distribution is followed: Poisson distribution, pseudo random distribution. Okay, all those distributions are there, mathematical distributions. If your elements are following any of these distributions, for example, if gas molecules are leaked from a container or from a room, from wherever, so they will always follow the Poisson distribution. Okay, for all those examples exist, all those mathematical model exist where you are going to apply the clustering technique if your elements are following a mathematical model. Then this mathematical model based clustering can be directly applied. Okay, then we also have examples of hierarchical clustering. Okay, hierarchical clustering. Okay, yes, there is a Prime Minister's office. Okay, then there are all the ministries: Ministry of Education, Ministry of Sports. Okay, all those ministries are there. Again, inside a ministry, if you know, there are different departments. XYZ. Okay, so this is how you can, I am clustering the Indian government or the Indian executive using the hierarchical clustering. Okay, so in a hierarchical clustering, some element will be present above some other element in the hierarchy, and the overall clustering technique will look like a tree. Okay, so these kind of clustering techniques are basically seen where you see there is a relationship of ordering. If there is a relationship of ordering, then mostly you can apply things like that. For example, your topological ordering. Okay, then this hierarchical clustering can be applied to that. Okay, now we have fuzzy based clustering. Okay, so what is fuzzy logic? Okay, fuzzy logic. So if you see your digital logic, you are studying, I guess. Yes, it deals with how many symbols or how many variables. Yes, digital logic में कितने variables use होते हैं, कितने symbols हैं, कितने bits use होते हैं? 2, 0 and 1. Yes, very good. There is a 0, there is a 1. Either your K-map, the place where it has a star, either there will be 1 or don't care for that matter. Okay, either it will have a 0 or it will have a 1. But what is this fuzzy logic? Okay, now fuzzy logic is saying that we can have intermediate levels between 0 and 1. So I can say 0 is old. Okay, 0.25, he is I say mature. 0.5, fairly old or fairly young, both are correct. 0.75, he is young. Okay, and 1 is a child. Yes, so if you see, now between 0 and 1, we also found out many intermediate levels. Okay, so my K-map, now it can have a value 0, 0.25, the don't care condition, and 0.5,
0.75 or 1. Okay, so if you see, again, if I want, I can have levels like this: 0, 0.1, 0.2, 0.3. It depends on you. Okay, and these linguistic variables, they define the degree to which the fuzzy value in fuzzy membership value in your is applicable. Okay, so if I say 0, then definitely he is old. If I say 1, then definitely he is a child. And between 0 and 1, everywhere, all the intermediate levels you can place here. Okay, so if this kind of clustering, by using the fuzzy logic, if we cluster, then that is known as fuzzy based clustering. Okay, yes, the partition based clustering we have already seen. Centroid based method, it is also known as centroid based method, and it divides the data into non-hierarchical groups. Okay, because here we are not following the hierarchical cluster. Okay, so this is density based clustering. If the density of one thing is different from another thing, then water and oil, you can easily cluster them. Okay, now distribution based clustering. Okay, Gaussian distribution, Poisson distribution, or your pseudo random distribution, Agarwal's distribution, all those things are there. Okay, all those things are there. New things are getting added on. Okay, distribution is an evolving topic, so every time they are going on adding new type of distributions, and they're also showing where these distributions are applicable in practical life. Okay, so yes, if your problem follows any distribution type, then you can easily use this mathematical type of clustering. Okay, now this is the example of your hierarchical clustering, where a tree structure will be formed because some of the elements will be placed over other elements in the hierarchy. Okay, and this will lead to a tree structure. Okay, yes. Now let us understand the problem of clustering. Now, given a distance function on the objects, the clustering problem seeks to divide them into groups. Okay, if I say distance function D should be followed. Okay, and this distance function, if the value of 2 points A1 and A2 is less than this D, they are placed in one cluster. If it is greater than D, definitely they belong to different clusters. Okay, so intuitively, objects within the same group are called close objects, and objects in different groups will be far apart. Definitely. Okay, viruses cannot be present together with another fungi. All the fungi will be differently placed. Okay, so this cannot happen. So now our algorithm to find a set of clusters is based on this idea. Okay, now we are going to find the cluster based on a distance function D, and we are going to apply it using a greedy approach. Okay, design of the algorithm. To find clustering of maximum spacing, we consider growing a graph on vertex set U. Okay, so these two clusters are present. Okay, now I to tell you that how the algorithm will work. So the first step is we will start growing a graph, which means by the vertex, which means we will take this vertex. Okay, from here we will start growing a graph. Yes, I have reached all the elements. So now from here we have one element remaining here. So this distance will now be compared. But as you know
this will be greater than the distance d, which is our distance function. So here itself, our cluster will end and this will form one cluster. Okay. Again, all the remaining vertices. So all these are remaining, right? Okay. So we'll start again from here. Okay. And go on creating a tree. Okay. From here, now again, one of these points will be compared, or any of these points will be compared. Since the distance obviously will be greater than d, here itself the cluster will end and this will form my second cluster. So if you see, this is the algorithm that will be followed, and as we can see, two different clusters are being formed. Okay, just we are comparing the distance function. Okay, we start by drawing an edge between the closest pair of points. Okay, we then draw an edge between the next closest pair of points. We continue adding edges between pairs of points in increasing distance order. Okay, so basically from here to here, if the distance is 2 and here to here the distance is 1, from here to here the distance is 0.7. So first the tree will grow like this. Okay, so this vertex will be selected. So any vertex which is closest to the starting vertex will be selected, and we will then go on adding the edges according to their increasing distances. Okay. So now if you see, what is this algorithm? What is the basic algorithm that we are following? This is exactly similar as finding a minimum spanning tree. Okay, you are given distances. Okay, you will obviously select the smallest distance. From here, then you will select the smallest distance. From here, you will select the smallest distance. But in addition, we have to do one more thing. We have to check the distance function also. Okay, so let us read how it is similar to the spanning tree algorithm. Okay, although our graph growing procedure was motivated by this cluster merging idea, our procedure is exactly Kruskal's minimum spanning tree. Yes, if you remember Kruskal's spanning tree, the algorithm for Kruskal's is same as the clustering algorithm. Okay, we are doing exactly what Kruskal's would do given a graph G on U if there was a cost function. There we had a cost function, here we have a distance function. Okay, the same thing. The edges can have cost function, here this exact thing can become the distance function also. Okay, but the only difference is that we seek a K clustering. Okay, that means, what is K clustering? K clustering means stop when we have K minus 1 edges. Okay, so in our spanning tree definition of the Kruskal's algorithm, I was saying, don't stop until all vertices are covered. Okay, and what is K clustering saying? K clustering is saying start from a vertex, follow Kruskal's, and stop when K minus 1 edges have been added. Okay, so instead of running it for our entire number of vertices, we can just run it until K minus 1 edges have been added. So the difference is that rest everything is same
between Kruskal's algorithm and the K clustering algorithm. Okay. This is equivalent to taking the full minimum spanning tree and deleting the K-1 most expensive edges. Okay. And defining the K clustering to be resulting component, this C1, C2, Ck, which means. Now, what does Kruskal's algorithm give you? Forest or a tree? What will Kruskal's algorithm give you? Am I audible to you? Am I audible to you? Yes, sir. Audible. Yes. What will a forest will be formed or a tree will be formed? Sir, forest. Forest will be formed. Definitely a forest will be formed. Why? Because for all the connected components, you will apply once, and all those vertices which are remaining, you will apply Kruskal's again there. Okay. So the similar thing will happen here in the clustering approach. Okay. If these are my clustered elements and these are the different elements, then I start from here. I find one connected component, I make it a cluster because this distance will be greater than d. Okay, distance function. Now, again, I will apply Kruskal's here until k-1 edges are formed. Once it is formed, I will stop here itself. Now, this becomes my connected component C1. This becomes my connected component C2. So, the K clustering is equal to C1 union C2. So, when I return this tree and this tree, this overall forest is my output. Because we have now found two clusters. That was our objective. Our objective was to find how many clusters can be formed if we have a group of objects. Okay. Now, based on this distance-based clustering, now we have used the Kruskal's algorithm, and this clustering is a direct application of Kruskal's algorithm. Okay, so the difference is that Kruskal's to stop when k-1 edges have been added. Okay. So yes, this is the concept of clustering, and this is how you can design an algorithm for clustering. So the problem of clustering, if you understand, then the algorithm is already in your mind. That is your Kruskal's algorithm. We are just applying Kruskal's algorithm for k-1 edges. Okay. And once we have that, our K clustering is equal to connected component 1 union connected component 2. Okay. What is the time? Okay. Tomorrow I think we have one more class. Yes, sir. Yes. Tomorrow we will discuss the concept of Huffman coding that you have doubt. Okay. Today I don't think we can complete it. Okay. If you want. Yes. Yes, any doubts? Okay. So yes, tomorrow we'll complete the Huffman coding part, and if you have any other doubts, you can also let me know in the group. Okay. Okay, sir. I will share this. Have I shared this clustering slide with you? Yes, we can discuss caching also. Okay. With one example,
we will discuss the concept of caching, because if we discuss caching entirely, it will take 2 hours. Okay, so that is not possible. We will take one example and we'll try to solve it. Okay, because all those proofs and all those things I cannot explain it to you in half an hour, because we have to complete the Huffman coding part also. Okay, some of you are having doubts in Huffman coding. Okay, so we'll do both the things. We'll take a small example and we'll solve that also. We'll try to solve that. I've shared the link for today's quiz. Okay, so you all can take the quiz.
Yes, what is the problem in the third question? What will be the answer? Anyone? Sir, in addition to merging, we also need in what sense it is a What? sir actually so what is the question actually asking? Yes, the question is asking in inversion counting, you need merging and what? Merge and the procedure itself will give you the answer. Merge and count. Sir, it is asking to the inversion. All the questions are on inversion, na? Okay. Okay, so we'll meet in the next class where we will discuss the Huffman coding and we will also see one example of optimal caching. Okay. Until then, thank you all. Thank you for your time. Sir, this quiz answers when you will discuss. Quiz answers. You have doubts in quiz answers. I don't think you have doubts in quiz answers. Because most of Previous quiz also. yes, most of the quiz and the questions which you have doubt, you keep them. You ask me tomorrow itself. We will discuss tomorrow itself. Okay. Okay, sir. Because if we discuss quiz questions, then we won't be able to discuss the Huffman coding and optimal caching. You have to decide what you want to discuss. Okay, we'll meet tomorrow and we will discuss the Huffman coding and your optimal caching part. Okay. Thank you, sir.